Hello aspirants, in this video we are going to discuss about how to attempt CSAT paper in the exam or in the mock test you must be giving for CSAT paper. So with respect to CSAT paper, time management is very important. Time management is very important for CSAT paper. Knowing concepts is one thing and doing the questions in the examination hall in the constrained time is another thing. So we need to master time management and we need to have specific plan with respect to CSAT paper. So first thing you can do is, see, as soon as you receive the CSAT paper, the question paper, start with reading comprehension और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर सकते हो. एंड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू हैव 27 क्वेश्चंस, राइट. सी, आई विल बी टेकिंग यू टू द 2023 एंटायर पेपर. आई विल बी डिस्कसिंग कि अगर मैं उस पेपर को अटेम्प्ट करता तो किस तरीके से अटेम्प्ट करता. सो इन 2023 देयर आर 27 क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड व्हाट आई सजेस्ट इज attempt these 27 questions in 30 minutes or at max 40 minutes. So 30 to 40 minutes में सारे 27 questions attempt करना है. 27 questions in 30 to 40 minutes. So that has to be the target. So if you are giving mocks or if you are practicing reading comprehension questions also, make sure you achieve this goal. So all the reading comprehension questions in 30 minutes has to be the goal. अब क्या होता है कि if you are, say, instead of 30 minutes, say you are taking 1 hour or instead of 40 minutes you are taking 1 hour. So what happens is here you are wasting 20 minutes. अब ये 20 minutes you can invest in solving reasoning or maths questions also, which तुम course से you are practicing those topics. So what happens is, see, even if you are investing 1 hour, तो at max you can get like 20 to 22 questions ठीक हो सकता है. यही इतना questions correct हो सकता है, right? Reading comprehension में it is very difficult to get more than 22 questions correct in reading comprehension. Out of 27, 5 तो गलत होंगे ही होंगे. 5 will be incorrect. So if you are investing 1 hour, then you are getting 20 to 22 questions, right? And if you are investing 30 minutes also, then also you can get 20 to 22 questions, right? ठीक है. अब देखो 1 hour हम में we might feel कि ज़्यादा टाइम लगाने से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक होगा. No, at max 20 to 22 questions. Those 20 to 22 questions you can get while investing 30 minutes or 40 minutes also. ठीक है. So make sure don't reread the passage multiple times. Read the passage, just skim through the passage, then read the options, eliminate 2 options जो हर क्वेश्चन में 2 options eliminate कर सकता है. ठीक है. then जो 2 options में कुछ डाउट होगा, then refer to the passage and then get to the answer. ठीक है. and one more thing I want to suggest is, in reading comprehension में 27 questions में, see, if we see in 2023 CSAT paper, reading comprehension questions are easy. ठीक है. passages are easy, passages are given in easy language and options are also given in easy language. और options काफी एक बार passage करके ही हो रहा था. ठीक है. that is in 2023 CSAT paper. On the other hand, if you see 2021 CSAT paper, reading comprehension are generally difficult. Especially अब difficult भी इधर भी क्या हो रहा था, see, there are some 7 to 8 passages which are difficult, but rest 15 to 18 passages are very easy. ठीक है. so even if reading comprehension difficult भी है 2021 में, there are questions which are very easy. So what you need to do is, see, you need to identify and do these easy questions first.
अब इजी क्वेश्चन से वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्या हो रहा है कि सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे आर गिवन लाइक 5 क्वेश्चंस एक जगह, ठीक है, या 3 क्वेश्चंस एक जगह, या 4 क्वेश्चंस एक जगह, ऐसा ब्रैकेट्स में यूपीएससी इज आस्किंग. सो अगर मान ले फिफ्थ क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ग्रुप में यू फाइंड 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट, देन लीव दिस ग्रुप एंड स्किप टू अदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, सेकंड क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, fourth question is of reading comprehension. If you find this question difficult, then skip these questions and go to say 18th question is reading comprehension, then move to these questions, then 19th question is reading comprehension, then 20 question is reading comprehension. So solve these questions. See, this happened in 2021 CSAT paper. So you can do that. See, if you find a group of questions which are difficult, ठीक है, अब CSAT 2023 में क्या, all are relatively easy, all are relatively easy. And one way to find out easy reading comprehension question is small passages based questions. वो क्या है कि 7-8 लाइन्स का पैसेज होगा, ठीक है, फॉलोड बाय 1 क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन से ये शुरू में करना है, बिकॉज स्मॉल पैसेज पढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे ढूंढ के आंसर निकालने भी यू वोंट टेक मच टाइम. So that has to be the approach. And see, I am telling you to do reading comprehension. इसका मतलब ये नहीं कि आप difficult question में हटक के जाओगे. So easy questions first में करो, then after doing these easy questions, then go for these difficult questions. जो 5-6 difficult questions होगा उसमें जाओ, and make sure you attempt all the reading comprehension questions, 27 out of 27, and attempt in 30 minutes. So ये हो गया first 30 minutes. And don't be rigid in the examination also. If you find reading comprehension मान ले difficult, मान ले, see UPSC can do this also, right? Say like 2021 में सिर्फ 7 to 8 questions are difficult, rest are easy. हो सकता है भाई 2024 2025 में it can give more difficult reading comprehension questions. So sense that if you find them difficult, then skip to reasoning or maths. So rigid नहीं होना है उधर, ठीक है. सो दैट इज फर्स्ट 30 to 40 minutes of your CSAT paper. You can do reading comprehension. अगर if you are comfortable in maths and reasoning, then also you can start, right? Then also you can start with maths and reasoning, ठीक है. ये हो गया first 30 to 40 minutes. Then second slot is in maths and reasoning में identify those topics, identify those 10 to 15 questions which you feel are very easy, and the topics you are comfortable, ठीक है. Identify those questions, those 10 to 15 questions from maths and reasoning, and do solve those questions. A 10 to 15 questions you can solve them in say 20 minutes or 30 minutes, ठीक है. The moment you get these 15 questions, 10 questions right, so now you are almost done with 37 to 40 questions reading comprehension और ये मिला के. So the moment you do, and since these questions are going to be easy questions and from the topics which you are comfortable, ठीक है, so these questions you will get maximum right. So now with 1 hour pass you are almost through the CSAT paper, almost. So because in 27 reading comprehension questions you can get 20 questions correct, 20 questions मान लेते हैं, ठीक है, and in these 15 questions if you can get 12 questions right also, that means you are 32 questions right. So 32 questions right, then you are left with almost 1 hour. So then you try other questions, ठीक है. अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में कंफर्टेबल हो, then you can take this second slot as the first slot. So that's what you need to do. So 32 questions right, then go to the third slot. Then here you will identify the questions, ठीक है, जो कर सकते हो तुम, then you will do them, then you will do like say again you will do
some 10 to 15 questions. ठीक है, so now let's see the 2023 CSAT paper and we will identify by किस तरीके का क्वेश्चन है हमें पहले करना है, किस तरीके का क्वेश्चन है वो बाद में करना है. ठीक है, so now let's see this is the 2023 CSAT paper, right? 2023 CSAT paper. 2023 CSAT paper. So as soon as you received the paper, just start with reading comprehension questions. See, reading comprehension questions. See, small passage is given. Okay, followed by one question. Followed by question. Passage is given, followed by a question. Just go through the passage and attempt the question. Go through the passage and attempt the question. Okay, then see again third passage is given, attempt the question. So if you see, so you need to attempt these kind of passages towards the beginning also, because these are small passages, easy passages you can attempt. Then go to next. See again, this is the thing, this is the example, these are the questions you need to attempt first while reading comprehension also. देखो कितना छोटा पैसेज है. ठीक है, इफ यू सी दिस पैसेज इज बिग, मतलब इतना बड़ा नहीं है बट थोड़ा बड़ा है. बट ये देखो इस क्वेश्चन को यू कैन सिंपली रीड इट एंड यू कैन सॉल्व इट. सो दीज आर द पैसेजेस you need to first target. So then next see this passage also, very small passage followed by a question, and this one also small passage followed by a question, crux of the passage. So these passages within 1 minute 30 seconds also you can solve these passages, right? So make sure just read the passage and then read the options. You can easily eliminate two options. Then in two options में the last two options में if you need to refer to the passage, then attempt it. So passages attempt, then see again this one is फिर भी lengthy but still it is doable. Passage followed by one question, just attempt it. See again this is very short passage, you can easily read it and attempt it. Then see this one again very easy passage, right? Short passage you can attempt it. So this thing you can solve it. Say if you find, say this passage if you find it difficult, ठीक है, मान ले imagine you find it difficult because see हो सकता है by passage followed by two questions, हो सकता है if you find it difficult, then don't do these passage questions for now, time being skip to next level of questions, right? Next level of passage questions जो next दिया हुआ, ठीक है, उधर पहुंचना. बट व्हाट आई सजेस्ट इज जनरली ट्राई टू डू द पैसेजेस. ठीक है, क्योंकि सारे पैसेजेस करना है. वी नीड टू डू 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 27. ठीक है, 27 आउट ऑफ 27 करना है. एंड इन दिस 27 आवर टारगेट इज टू गेट 21 क्वेश्चंस राइट. 21 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस राइट है, 22 भी आ सकता है. ठीक है, जो इनकरेक्ट होंगे वो होंगे. ठीक है, बिकॉज सी देयर इज नो इन coaching institutes key and UPSC key also it varies. They take too much time but still options vary, so you cannot help it. So once you get 22 questions right from the reading comprehension, you have to be happy with it. बाकी मार्क्स हमें लेना है मैथ्स और रीजनिंग से. ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस कर लिया. ठीक है, सी अगर छोड़ना भी है, अगर लास्ट भी करना है तो दिस काइंड ऑफ assumption 1 2 3 4 these kind of option based questions you can reserve for the last, because इनमें multiple options करना होता है, multiple combinations वो देखना होता है and all. ठीक है, so ये reading comprehension, see if you see 2023 में reading comprehensions are very easy. Passages are also easy, written in easy language, and options are also very easy. You can easily identify options. So don't miss out on. See what many students they do is they just solve 20 questions of reading comprehension. 20 questions of reading comprehension. By 20 में से मान ले you get 15 questions right. भाई you are losing on 5 questions right. भाई अगर 27 किया, ठीक है, you can get 20 questions right. 20 questions right. By doing 20 questions किया तो 15 questions you will be losing on 50. So that's why I suggest is do all the reading comprehension questions in your CSAT paper and do it in 30 minutes
to 40 minutes at max. भाई अगर 40 मिनट से ज़्यादा, एक भी मिनट ज़्यादा हो रहा है, you need to reduce it. So mock test में this has to be your goal. 30 minutes में किया, see I have been talking to students and I have been suggesting them. So initially they used to take 1 hour for reading comprehension. Now they are bringing it to 45 minutes. So I am suggesting them to bring it to 30 minutes. And 45 minutes में भी ला रहा है तो उनका एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर फर्क भी पड़ रहा है भाई, 20 क्वेश्चंस टारगेट करना है, 20 क्वेश्चंस ठीक हो जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 30 मिनट्स में, दैट इज मच बेटर देन 23 क्वेश्चंस ठीक हो रहा है, 23 क्वेश्चंस हो रहा है वो 1 आवर में हो रहा है. ठीक है भाई, ये 30 मिनट्स है, ये इन्वेस्ट करो मैथ्स और रीजनिंग में, यू कैन गेट मोर क्वेश्चंस राइट. सो दैट हैज टू बी द लॉजिक. सी इफ यू सी अगेन, सी दिस पैसेज, कितना छोटा पैसेज है. You can just read it in 10 seconds and answer it in 10 seconds. ऐसा passages है, you can easily solve it in 30 seconds also. So don't skip reading comprehension, मतलब don't miss reading comprehension questions in your CSAT paper. Don't do it. अगर कुछ मुश्किल लगा कि भाई दिमाग चल नहीं रहा है, क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा है, then only you can skip. अगर उसमें भी है, what I suggest is mark it, take risk and option मार्क करके आगे बढ़ो. दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. ठीक है, सी अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो वंस वी डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सी दिस इज अगेन शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय ए क्वेश्चन. सो शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय ए क्वेश्चन एंड इजी पैसेजेस है, ये इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है. ठीक है, सो दैट हैज टू बी द गोल राइट. सी पैसेज, सॉल्व ऑल द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो now you solved all the reading comprehension questions. So you solved say 27 questions. So you took say 35 minutes. So reading comprehension bubbling भी करना है. See with respect to CSAT paper, once you mark first question, ठीक है, then immediately mark it in your paper and go and do the bubbling. Second question, go and do the bubbling. Third question, go and do the bubbling. Then say 15th question of reading comprehension, go and do the bubbling. So in 35 minutes with bubbling you are done with 27 questions. And 27 questions में अब accuracy के साथ you need to get 20 questions right. अगर 20 questions right नहीं हो रहा है in your mock test also in reading comprehension, then you need to work on your reading comprehension. So you can watch reading comprehension classes on the CSAT Fit course. ठीक है, CSAT Fit course का reading comprehension, I will give you the link of CSAT Fit course. You haven't bought the CSAT Fit course, you can buy it by clicking on the link given in the description of this video. So CSAT Fit course ka, let me tell you, see it is one stop solution for CSAT paper. It has 80 plus hours of CSAT, each class of 1 hour, so nearly 80 plus classes of CSAT covering all maths, reasoning and reading comprehension. So if you are planning to buy any course for CSAT paper, you can check this course. See, this course is available for just rupees 3000. Online classes है, online recorded classes है, and first 10 classes are available on this YouTube channel. So before buying the course, you can watch those 10 classes. If you like the classes, then only you can buy the course. Okay, so now coming back, so we are done with 35 minutes and we are done with 27 questions, out of which our goal is to get 20 questions right. भाई उससे ज़्यादा जितना भी आ रहा है वो बोनस है. ठीक है, so now आता है the second slot. So now what you need to do once you are done with the reading comprehension questions? So now you need to identify those questions which you are pretty comfortable with. Identify, see I am writing it. See, identify those questions. Identify questions in which you are comfortable or easily solvable questions. Easily solvable questions or topics of your comfort. इधर से क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब देखते हैं 2023 में ऐसा क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस है. ठीक है, सी इफ वी सी दिस इज permutation combination
पेयर्स वगैरह का, इनको अभी टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शुरू का टाइम है, वी नीड टू गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टाइम, बिकॉज इजी क्वेश्चंस करना है इस टाइम में। डिफिकल्ट जो भी बिल्कुल हम कंफर्टेबल है, हम पढ़ के आया है, सी ऑल दीज टॉपिक्स वी डोंट स्टडी मच, राइट, सी दिस टॉपिक ऑल्सो वी डोंट स्टडी, सो इनको अभी नहीं छेड़ना है। सो नाउ व्हाट क्वेश्चंस आर दोज इज, सी इफ यू सी रिमाइंडर बेस्ड कॉन्सेप्ट, सी एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। हम पीवाईक्यूज भी किया या रिमाइंडर कॉन्सेप्ट भी वी डिड इन आवर सीसैट फिट कोर्स, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू बी कंफर्टेबल विथ बिकॉज वी प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन क्लासेस एंड पीवाईक्यूज में भी किया है, तो हमें पता है। सो दिस क्वेश्चन वी नीड टू सॉल्व नाउ। सो ये हो गया वन क्वेश्चन। सो दिस इज आवर 28th क्वेश्चन, 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद। देन सी क्वेश्चन ऑन यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। सो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट वी प्रैक्टिस्ड इट इन द क्लास सीसैट फिट कोर्स में। सो नाउ दिस क्वेश्चन यू नीड टू अटेम्प्ट। जो भाई इजी टॉपिक है यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर भी इजी टॉपिक है, वो क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज आवर 29th क्वेश्चन, ठीक है। देन सी दिस क्वेश्चन वी वोंट अटेम्प्ट नाउ बिकॉज हमें पता है ये इजी है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस किया है, बट दीज आर पॉसिबिलिटी, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। भाई यूनिट डिजिट में क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी इजीली कैलकुलेट कर दिया सिंप्लीफिकेशन मेथड से, आंसर आ जाएगा। सो वी डिड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हमें पता है सॉल्व कैसे करना है, अभी नहीं करेंगे, इसको सेकेंड राउंड में करेंगे। सो नाउ अब ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे बिकॉज भाई हमें वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है जो हम कंफर्टेबल है, हम प्रिपेयर करके आया है। सो 29th क्वेश्चन हो गया अपना, अब आगे बढ़ना है, ठीक है। द मोमेंट यू सी ओके दिस रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस किया है, उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट किया है, उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ठीक है। 29 क्वेश्चंस हो गया। नाउ सी ये सब क्वेश्चंस अभी नहीं टच करेंगे बिकॉज दीज आर पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, इजी हो सकता है, वी आर कंफर्टेबल, अभी टच नहीं। इवन दिस वन ऑल्सो वी डोंट टच इट, ठीक है अभी। सो फर्स्ट राउंड में व्हाट इज द गोल, गोल इज टू डू दोस क्वेश्चंस इन विच वी आर प्रेटी कंफर्टेबल, ठीक है। सो नाउ सी ये क्वेश्चन कर सकता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, 6 डिविजिबिलिटी रूल नंबर का। सो दिस वुड बी आवर 30th क्वेश्चन, ठीक है। सीसैट फिट कोर्स क्लासेस में हम डिविजिबिलिटी रूल का पढ़ा, अगर ये नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वी वोंट टच दिस वन आल्सो, ठीक है। ये पता है, ठीक है, देन वी कैन टच इट। देन सी 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। सो दिस क्वेश्चन वी विल अटेम्प्ट बिकॉज हम क्यूब के क्वेश्चन किया विथ सिंपल वन फॉर्मूला, वी कैन सॉल्व इट इन लेस देन 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला से। सो दिस इज आवर 31st क्वेश्चन, 31st question. And now come to this one. See, this is how many 8-digit numbers can be formed by rearranging digits. So this is permutation question. So अभी चलो permutation many of you might feel difficult. So अभी के लिए skip करते हैं, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को easily कर लेता because 30 seconds में I can easily solve it. So अगर अब easy लग रहा है तो we need to solve it. So अब 31st question हो गया. Now see, this is time and work. ABC working independently can do a piece of work respectively. A alone, B alone. So I know I am comfortable in this area. Time and work पे we have practiced n number of questions. So this will be my 32nd question. ठीक है, 32nd question. Then see, I won't do these questions also. I won't do these questions also. क्योंकि मेरे को वही questions करना है in which I am pretty comfortable. जो topics I am pretty sure. I won't do this question also. I won't do this question also now. As of now, in first round, I won't do this question also. ठीक है, ये सारे questions है, each digit 9 digit number is 1. ये बाद में first is just in first glance कि उससे आ रहा है वही questions करना है, ठीक है। Then I won't do this, I won't do this, right? Then see, come to this one. See, I won't do this because I know these are not easy questions. Combination, probability वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है। Then I will do this question. So this will be our 33rd because I know coding and decoding का काफी easy question होगा. So this is our 33rd question. Then see, look at this one. This is very easy question. So this would be my 34th because just looking at it, see how many statements
are required to determine the oldest person. So I can form it, I can do it, right? Or if you want, you can skip also. So the idea is the easiest questions है वो पहले करना है, easiest questions पहले करना है, ठीक है, in the next 30 minutes. So ये क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन, see then this is question on relation family वाला, so easy question है, so you can solve it, you can, so this will be 35th question, ठीक है, easy question. Then अगर ये कुछ group of different question है, जम रहा है, if you gone through the question and you can identify it, then you can do it, or else बाद के लिए, ठीक है. Then so we are done with, so now 35th question. So 35th, now see I know ये interest का है, कुछ दिया हुआ है, so I will reserve it for later, I won't do it now. Then how many natural numbers are there, so possibility वाला question है, so I won't do it now. See again here it is also not a direct concept based, so I will reserve it for later. Okay, see now, see what is the sum of 4-digit number less than 200 by digits, none of the digits repeated. So I am comfortable with this type of question, so this will be my 36th question, ठीक है. Then see if you are comfortable with, if today is Sunday, then exactly 10th day, तो ये कर सकता है. अगर if you are not aware of it, then you can. So what are the number of selections, 10 consecutive, ये it would be for next slot. So basically you are doing the easiest questions in the first round. Then see अगर LCM HCF का question है, if you are comfortable, then you can easily solve it here. अगर comfortable नहीं है, then you can come to the next round में कर सकता है. So 36 I am taking only the easiest questions now. 36. Then see I won't touch it now, I won't touch it now, and this one also I won't touch it now, ठीक है, and this one also I won't touch it now, question and statements, and this one also I won't touch it now, ठीक है. So because I can solve them, I can see these are easy questions, I can solve them, but जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, एक फॉर्मूला लगा के आ सकता है, वो फर्स्ट राउंड में करना है, ठीक है. देन आई वोंट डू दिस वन ऑल्सो, आई वोंट डू दिस वन ऑल्सो एज ऑफ फर्स्ट राउंड, ठीक है. देन सी आई वोंट डू दिस, आई वोंट डू दिस इन द फर्स्ट राउंड, एंड इफ आई वांट आई कैन डू दिस HCF का वगैरह. if I want, if you practice these kind of questions, then you can do it. So this would be your 37th question, ठीक है. और अगर नहीं है तो फिर I won't do this, ठीक है. Then I won't do this, then I won't do this, ठीक है, because it would be little bit time consuming. अगर topic किया है, ठीक है, so if you are done, see in our course I did 2 classes on these kind of questions. अगर टॉपिक किया, इफ यू आर कंफर्टेबल, देन यू कैन डू इट. सो इफ अगर मेरा केस होता तो आई वुड डू इट, बिकॉज इट इज ईजी. क्या क्वेश्चन है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस किया हुआ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो हो सकता है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज सी आई वुड डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 6, सो दिस वुड बी माई 37th क्वेश्चन. एंड आई वुड डू दिस सीक्वेंस बेस्ड, ठीक है, वी डिड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो दिस वुड बी माई 38th क्वेश्चन, ठीक है. सो देखो आई एम सीइंग जो एक बार लगा के करके फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा आंसर आ सकता है, वो क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग. देन सी आई वोंट डू दिस, आई वोंट डू दिस, आई वोंट डू दिस, बिकॉज पॉसिबिलिटी वाला है. एंड आई वोंट डू दिस इन दिस राउंड, आई वोंट डू दिस इन दिस राउंड, एंड आई वोंट डू दिस इन दिस राउंड, एंड इफ आई वांट आई कैन डू दिस, सी आई कैन डू दिस. सो इन कॉम्प्रिहेंशन, सो दिस वुड बी माई 37th or 38th question. So now, so with 80 questions, 38, sorry, this is 39th question. So 39th question. So now I am done with 39. So this process, see now I done what? See 27, ठीक है, 27 reading comprehension questions I have done. Then 39 तक, that means 12 maths and reasoning questions I have done. 12 easy questions. So these 12 questions, if I take, say here it is 35 minutes, here I can do it in 25 minutes, ठीक है. So now I am done with 39 questions and the time is what? 1 hour. 1 hour, and
out of these 12 questions, if I get 10 questions right, because वो सारे questions are the questions in which I am comfortable, right? In which I am comfortable, I have practiced them, I know the concepts. Oh, so 10 questions right. So, and out of these I get 20 questions right. So now overall I have 30 questions right. Okay, and now I am left with 1 hour. So now in the remaining 1 hour, what you need to do, again go back and try to solve those questions which you can solve. So if you can solve, see, then read this question. If you find it, you can solve it, then solve it. So then this question, if you think you can solve it, then solve it. Agar if you find, see, say imagine if you find this question difficult कि यार ये पता नहीं है, या आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ दिस टॉपिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी, then skip it, don't do it, do it in the third round. So solve जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, and in this also see, and in second round also do those questions which you can solve. जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो पहले किया हुआ है, बट ऑप्शंस में थोड़ा टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. सी आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई कैन, बिकॉज वी प्रैक्टिस्ड एडिशन बेस्ड क्वेश्चंस, right? And these type of questions are asked in PYQs also. So invest 2 minutes on this question and solve it. Okay, and if you can solve this question, solve it. So now do the medium type questions I call it. Medium type questions, like the questions which you have done somewhere, so which by investing some time you can solve them. See, like questions like जैसे क्या होता है, ठीक है, see questions like this is very easy question, right? Because it is based on even number, prime number, composite number concept. So you need to do these kind of questions in the second round, ठीक है, and you can solve these kind of questions also, ठीक है. Then again see this kind of question, see this question you can solve, ठीक है, second round question. And this question if you know the concept you can solve, अगर नहीं है तो नहीं मत करो. And this question, this is one of the easy questions, ठीक है. So this question you can solve in the second round. And see this question if you know the concept you can solve it, अगर नहीं है तो मत solve करो. And this question also you can try, this question also you can try, and this question also you can try, and this question also you can try. So these are second round questions. So थोड़ा पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या करना है वो पता है, then solve them, ठीक है. So this is the second round. See again, ठीक है. So इसको नहीं करना है because this is bit difficult question, it will be time consuming even if we know the concept, ठीक है. So next see you can solve this question, right? And you can solve, see अगर interest concept पता है ये तो you can solve, नहीं तो you don't solve. And see this question is difficult, right? So don't solve it. And you can try, see these kind of questions you can try, these kind of questions, and LCM HCF based questions, see this question you can try, right? Now you know concept पता है, LCM का question है, we have done these kind of questions, so you can try this. And again see these kind of questions you can solve, or see, and this kind of questions you must solve, ठीक है. See P and Q greater than 0, these kind of, see these are basically easy questions given in statement and question based. Once you have good conceptual knowledge, again this question also, ठीक है. So these are the questions you need to solve. Rather than solving this type of questions, it is easy to solve this kind. अगर ये questions करना है तो ये third round में करो, because they need more time, more conceptual clarity, more calculations. So इस type of questions करना है, ठीक है. अब ये भी थोड़ा difficult question है, इनको नहीं करना, जो medium questions है वो करो, ठीक है. Again see this kind of questions, ठीक है, these are the kind of questions you can solve in the second round. See again this is very easy question, right? second round में इस तरीके को questions करना है, ठीक है. Now see these kind of questions, this question you can try, and this question also you can try, and this question we practiced, right? So the idea is
कि if you want you can try this question. So the idea is in second round you need to solve again some. So कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चंस में आंसर आएगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं आएगा आंसर. So in second round also you will try to solve 10 to 15 questions, 10 to 15 questions. And even if you get 10 क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन बेस्ड इजी कॉन्सेप्ट से, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू गेट. सो फ्रॉम हियर आल्सो यू नीड टू गेट 10 क्वेश्चंस राइट, 10 क्वेश्चंस राइट. सो दिस प्रोसेस यू कैन टेक फॉर 30 to 40 minutes, 30 to 40 minutes, 30 to 40 minutes. So with 1 hour 30 minutes you have gone through almost all questions and you have done nearly 27, 39 plus 49 to 50 questions. So 50 questions तक किया. अभी कुछ मुश्किल क्वेश्चंस है या कुछ कर सकता है तो वो कर सकता है. So that is the idea. So idea is अगर मिस भी होना है, ठीक है, पेपर मिस भी इवन हो सकता है कि ये प्रोसेस ही सेकेंड टाइम का प्रोसेस ही यू माइट टेक 1 hour 45 minutes तक, 1 hour 50 minutes तक, थर्ड राउंड का टाइम भी नहीं मिला. So then also you would miss out on difficult questions. You would miss out on difficult questions only. So the idea is you need to do all the easy questions or all the medium questions. Idea is to do all easy and medium questions. ठीक है, because भाई CSAT तब रुकता है जब you are not able to solve easy questions और you are not able to solve medium questions. and difficult questions है वो बाद में करो, अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर easy questions नहीं कर पाया, easy questions में गलत किया, उधर दिक्कत आती है. So that's the idea and this is the right way of going through the things. So once you do 50 to 55 questions और उसमें भी you are doing questions which are easy, which you are comfortable in, ठीक है, एंड यू आर कीपिंग ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सो उसमें सही होने का भी ज़्यादा वो होता है, ठीक है, गलत भी कम होती है. सो यू कैन ईजिली द मोमेंट यू टच 50 to 55 क्वेश्चंस यू कैन ईजिली क्वालिफाई द CSAT पेपर. सो दैट हैज़ टू बी द आइडिया. सो यू हैव टू डू इट इन 2-3 rounds, easy, medium, with some time you can solve, then difficult questions. That has to be the idea. And अगर जब मॉक टेस्ट भी देना है तो यू हैव टू फॉलो दिस एंड द गोल इज यू नीड टू नो विच एरियाज यू आर कंफर्टेबल इन. जिनका फॉर्मूलास आपको अच्छा पता है, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना ही एक आर्ट है CSAT में. द मोमेंट यू मास्टर दैट यू कैन इजीली क्लियर द CSAT पेपर. ओके, सो दैट्स इट. जैसे मान ले अब इस क्वेश्चन को आप करने लग गया, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द CSAT पेपर. ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी करके आया तब भी ये गलत कर सकते हो, तो इनको क्यों करना है फर्स्ट राउंड में, इनको लास्ट में करना है अगर टाइम मिले तो. अगेन, ठीक है, समझ रहे हो. सो सी अगेन देयर आर मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट, राइट. सो यू शुडंट डू दोस क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, जैसे ये कॉन्सेप्ट मान ले पता ही नहीं है आपको, यू कैन नॉट सॉल्व देम. अगर कॉन्सेप्ट पता है दैट इट हैज टू बी इन द फर्स्ट राउंड क्वेश्चन ओनली. अब ये क्वेश्चन है, दिस हैज टू बी इन द लास्ट राउंड क्वेश्चन, बिकॉज बहुत पॉसिबिलिटीज है. जो पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन है वो टुवर्ड्स द एंड करने की कोशिश करो. जो फॉर्मूला लगा के भाई इफ यू आर डूइंग द CSAT fit course and you watched all the classes, if you watch all the classes, then you can easily identify the questions which you are comfortable in from the examination paper. If you solve them, then you can easily crack the CSAT paper. Okay, so why to focus on topics which are not covered in the classes? Focus on topics which are covered in the classes, which you are comfortable in. Solve them, you can clear it. So oh yeah, that's it for today's class. Okay, so I hope this video is helpful for you, and make sure you manage your time, you invest your time in the questions. देखो, if you see one difficult question, 2.5 marks. ठीक है, one easy question भी है 2.5 marks. by difficult question में तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा,
ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ईजी क्वेश्चन में यू कैन ईजिली सॉल्व इट, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर, सो ठीक होगा। सो ईजी क्वेश्चंस पहले करना है, ठीक है, that has to be the goal. So that's it for today's video. I hope this video would be helpful with you. अब मॉक टेस्ट में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय।